a profit side. Okay, so one point I can take is like brand image. Like if you are giving coupons, it can impact the brand. Okay, because consumers can think they are, inflating the prices and then giving kind of promotion. They are just ballooning it. Okay, so in terms of customers, do you think by these coupons, by these promotion, you are targeting wrong customers, or you are not targeting your right customers? And if that is so, whom do you think are the right customers? Ma'am, customers will become price sensitive. only when promotions are in effect. Ma'am, the right customers would be the price sensitive customers. Do you think so? Yes, ma'am. You are saying right customers would be the price sensitive, but it's going to be short term. Don't you think? जब ये promotion नहीं होगा, competitors will be able to draw customers away easily. Ma'am, okay, because what a loyal kind of customers we can bring in by these promotions? Ma'am, all potential customers. If a big brand is putting a discount on his clothing or any other product, though middle class person and even some other also market he can target. Other people can also prefer that high brand also. Ma'am, through this a brand can promote new trials. But do you think that's a good thing? Do you think that's a good thing? We will cover this topic exactly. That you are decreasing the prices by 50% of an upscale brand, and then you are giving middle class people are also. No, ma'am, it's not a good thing, because the target market can get offended and can stop using this market product. expansion technique, we can say. Yes, market expansion. Okay, so market expansion can be in terms of, like, for one example, if I have to give, you bring in new customers. And by new customers, I'm not saying that you bring in these middle class people for your high scale, upscale brand. No, because they are not your right customers. Yeah. By new customer, I mean you bring in people, those who are like, for example, you are in frozen food category. Okay. And you bring people who don't use frozen food, and because of giving them promotions, they have started trying frozen food. Okay, you are bringing this new pool of customers. Yes, ma'am, promoting new trials. Yes. So, but you have to understand the kind of customers we are bringing in. They are still high class, but they are like new customers in the sense they are not buying from competitors. They are not the ones, they have not used or explored this category. Okay, so these are like new customers. Second is that when you start pulling in your competition, customers from your competition, that is like positive impact, isn't it? So yes, positive impact could be when you pull new customers who have not tried your product or that category actually. Okay, like frozen food example I gave. Or positive could be then you pull the customers of competitors. And what could be the negative impact? What could be the negative impact of giving coupons or promotions? Short-term. Ma'am, the loyal customers could get offended, like to pay high amount every time. Like other than getting offended, like that's kind of a little bit a long-term kind of thing. Always expect to damage the image, but it will reduce the brand image. It will reduce the brand image of the product. Yeah, this will also reduce make people think that the product is actually the quality of the product is bad. Quality of the product is bad. Okay, just one more point. Don't you think that there is this customer who was paying me like 100 rupees for the product, okay, and now I'm giving like 50% discount? So he is taking advantage of this coupon, and my margins are decreasing. Hello? Ma'am, your voice is repeating. Voice is echoing, ma'am. Yeah, it's because someone of you. Just 1 second. I think it's not from my side, but somebody has kept. Yeah, it's on mute now. Okay. So yes, so the negative impact
apart from brand image could be that this customer was paying me ₹100 for the product. And when I started running promotions like 50%, now this person who is my, loyal customer is actually paying me only 50 and he is taking the advantage of coupons. So मुझे तो वो 50% का loss हो गया उसमें, isn't it? Exactly, ma'am. Ma'am, one more point could be there. Like if we are introducing the product into a new market where this price sensitivity is high, so the number of acquired customer would be less, because once we are removing these coupons, so then those customers won't be buying our product. So it is a loss of our customer base. Exactly. Rather than just that's what we said, that they are not your right customers. Yes, it's ma'am. the same thing. कि वो आपके, you are selling like high or upscale, thing, and because of sales promotions, you are not getting right customers. Like 50% off पे वो लोग आ रहे हैं. Some people who prefer like middle class and maybe they'll go for lower price and they are coming just because you are offering 50%. जब तक sales promotion रहेगा तब तक वो आपके customers होंगे. As soon as you remove that promotion, they'll go. Yes, Bharat. Yes, tell me. We can also take that the negative impact of this sales promotion can be inventory reduction. Because of the sales, there is a basic motive behind the sale is to clear their stock. But there are some also chances that उनको अगर 10 प्रोडक्ट बेचने उसकी जगह उनके 50 प्रोडक्ट चले जाते हैं तो उनका इन्वेंटरी काफी लॉस हो जाता है. सेल्स प्रमोशन करते ही इस बेसिस पे है कि उनका इन्वेंटरी स्टॉक जितना बचा है उसी को क्लियर करने के लिए ही उतना ही पीरियड के लिए सेल्स प्रमोशन. पर अगर ऐसा हो कि उनके पास इतनी इन्वेंटरी ना हो, ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ they don't have that much inventory और उसमें इतनी ज्यादा डिमांड आ जाए because that sales promotion is so attractive, everyone starts doing that, but they are not able to keep up with the demand, and then they can incur like that negative publicity. Ma'am, but they only, in most cases, they only provide coupons for those stocks which they want to clear. Okay, yes, but okay. I mean, inventory. Yes, stock clearance sale. That's what it is said. Yes, ma'am. Okay. So let's understand through this case study. This case study is of one upscale restaurant. Okay, so do you remember something about Zomato Gold? Yes, ma'am. Yes, This is 1+1. Yeah, hypothetical study. Okay, this is one upscale restaurant, and this restaurant decides, let's go on Zomato Gold and give that 1+1 on drinks and dine in, all those things. Be it dine in, and they have like this gold membership on dine in as well as on delivery also. They have this start. Yes, ma'am. So this restaurant, these are average number of reviews per month. ये reviews है जो Zomato पे आ रहे थे इस restaurant के. They don't know. There are just number of reviews. They don't know whether these reviews, these are the average number of reviews. Okay, ये इतना, all these. Okay, so they don't know like whether they are positive or negative. बस उसमें थोड़ा increment लग रहा था उन्हें. यहाँ पे उन्होंने start किया Zomato Gold, and see this. After the promotion, offering this gold membership and before offering this gold membership. So what can you see? And this is, sorry, what? इनके brand awareness बढ़ी है. These are reviews. Their restaurant was visible to many more customers who were like related to Zomato Gold. Awareness बढ़ी है, ma'am. Awareness बढ़ी है. उनके reviews बढ़ते हैं. Visibility as soon as their reviews increase, the Zomato ratings also decrease. But reviews increase हो रहे थे, पर उनकी Zomato rating क्यों कम हो रही थी? Because reviews negative भी हो सकते हैं ना. Negative. More of the negative. Because the reviews are increasing, but we are not sure they are the positive or the negative reviews. Okay, yes. Whether so that's this means they are negative reviews. Or negative. Yes, Jatin. Yeah. Yes, Jatin. You raised hand. Okay, so probable reason for depend ratings could be they were attracting the wrong target, like I discussed.
people, you know, because they are giving like 50% discount, and those people who will not come if you don't give promotions, they were coming, and maybe because of this, that brand building, that, you know, brand image is dipping, and they were giving like differential treatment. Have you ever seen this? Have you ever witnessed this? कि अगर जब आप promotion लेके जाते हो, that you already, if they know that, you know, you are Zomato Gold, you are asking for discount, then they start treating you differently. Yes, ma'am. Okay, so that kind of differential treatment, they don't get the same service. Okay, because, you know, people are coming with these discounts, and it can be so attractive that, you know, demand itni zyada ho gayi ho us restaurant ki that they can't keep up with that growing demand. So these can be the reasons ki sales promotion unke liye actually tip kar gaya unki ratings mein, and that was like more of a negative impact of promotion. Okay, so let's see one more thing, one more case study. So what do you think? What should be the recommendations here? Like when they are like going for promotion, and then they see that the number of reviews are increasing, but ratings so kam ho rahi hai. What should they do? Yes, ma'am, they should define their target market properly. Exactly. Target market को target. Yes. Ma'am, Karthikeyan ने बोला था ये. Consistent behavior. Sorry, Karthikeyan. Yes, ma'am. Even they can consistent behavior would do the work. Who used to visit that restaurant, this specific offer should be provided to that person only. Okay, already they are you know, loyal customers, maybe. Yes, send it to them. They should have the inventory ready. There should not be a that they have the demand, but they cannot cope up with it. And ma'am, they should use pull strategies, not push strategies. What kind of pull strategy do you think? Ma'am, like I think like yes. Advertisements and awareness about the product and educated about the product to the customers, like what our product is all about. Because if you the product is the quality of the product is good, and the product is able to attract the customer, it will good. Otherwise, it will reduce the ratings. But okay, but you know, when you are selling a luxury product or maybe a upscale restaurant, you are an upscale restaurant. Okay, you define your target. You know, I want people, and you set your, you know, cost, you set your audience, everything according to them, and you don't want, you know, everyone to come and you know, have food, because you know, some people won't come. They'll come just for a shorter duration of time. You know, until unless you are giving them promotion, they'll not come. So there's no point of, you know, targeting these customers or even giving them any incentives. So inventory, I don't think so that's a good idea, because even in restaurants they have like they can't you know, inventory is a very big thing for restaurant to keep up with that inventory, to keep up with that demand, and that's something which is like becomes difficult. And no differential treatment to the customers coming for these discounts and all. Same quality of service, we can say. Yes. So some of the findings is a coupon is given to attract new customers. Okay, and make sure you send it to right customers, else you are wasting your money. Like who mentioned this? Karthikeyan mentioned that, you know, identify your target customers and give this discount only to your target customers or the customers who have always been very loyal to you. Okay, those customers. Okay, let's move forward to next case study, which is of clothing brand, and we will measure short-run impact of sales promotion in this. Okay, so this is a clothing brand, and this brand ran a promotion in Q3. Promotion run किया उन्होंने Q3 में, but they announced it in Q2. Okay, this is one exercise that you have to do. So please understand it. These what are these? These are just sales numbers. 2015, 16, 17, 15 और 16 में उन्होंने कोई promotion नहीं किया, no promotion. और उन्होंने 2017 में promotion किया Q3 में, पर
प्रमोशन को अनाउंस कर दिया Q2 में कि हम Q3 में प्रमोशन करेंगे. Okay, so you have to explain the dips and increment in quarter-wise sales. Okay, estimate the baseline sales first in 2017. So year on year, what is the growth, and accordingly you have to estimate that, you know, if there is no promotion, without promotion, कितना sales हो जाता था 2017 में हर एक quarter का. Okay, and अगर impact promotion का check करना चाहे, what would be the impact? Basically baseline minus whatever the current sales numbers are. And what do you think? Why these dips and increment is coming in quarter-wise sales? And you have this. I have already told you. Like the company announced the sale promotion in Q2. All those sales promotion kiya Q3 mein, but they announced it in Q2. And you have to you know, take care of this trend, seasonality, stockpiling, and waiting for promotion. All these things into account. And do you think you will be able to do it? Yes, ma'am. It's easy, right? Estimate the baseline sales and the impact of promotion. Okay. So this is one small exercise, and let me explain you all these terms: trend, seasonality, stockpile, waiting for promotion. So what is trend? The latest taste and preference of so ma'am market में चलने वाला people used to buy only those products. Ma'am, projection of the recent fashion going on in the current situation or scenario. The current scenario, the projection, and what factors does it take into account? So this is like trend is historical data. Like historical data. Year on year या month on month जो आपकी growth होती है. And this is something that will happen. It's not because of promotion, not because of any other thing. Just year on year, month on month जो आपकी growth होती है. It can be because of like population. हर साल population बढ़ रही है. Or if I say like, you know, in that city, some, you know, there are people, migrants, they are coming up. Or, you know, other citizens are coming up, or whatever. Or basically population is increasing. And so you see this year on year, yeah, month on month, you know, gradual increase, gradual growth in sales. That is what we call trend. What is seasonality? Ma'am, quarterly or when are the sales too low? Like this. Yes, ma'am. Like in winters, people won't buy cotton clothes, but they buy wool clothes, woolen clothes. Yeah. So winters and summers, you know, all products have ice cream also decline in the winters. Yeah, and so like ma'am, during the festival seasons also. Yeah. So yeah, like everyone is waiting for the monsoon sale for clothing. So exactly. This could be one trend. Yes, everyone is waiting for it. We will see that point here. We'll discuss that point here. But seasonality is more of like January, February में हमेशा winter clothes की sale होगी. कुछ products की sale increase होगी Jan Feb में, कुछ की decrease होगी. ऐसे ही October, November more of festival seasons, उन months में increment होगा. और अगर आप year on year ये देखोगे तो हमेशा आपको sales के numbers में वो spike दिखेंगे ही दिखेंगे. Okay, so there is trend, there is seasonality. Third is waiting for promotion. So, for example, if I say there's going to be a sale in Select City Walk next month. Like in the Amazon, there is a big Indian sale. Like big Indian sale, exactly. So what people do, what is the behavior of people? Some people wait for sale only to buy clothes each year. Yes. Yes. For example, मैम इस पे मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जो ब्लैक फ्राइडे सेल अब इंडिया में भी होने लगी है, वो कौन सी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज में आएंगी? Waiting for promotion. Black Friday sale is also like waiting for promotion, but we'll cover promotion. It's kind of promotion only. Okay. Generally, you get it in US and all. It's like Amazon से ही तुम compare कर सकते हो. जो Amazon वाला आपने बोला. It's kind of promotion only. So December 2019 में announce हुआ कि January 20 में कोई promotion होगा. There will be sales promotion. Okay, like I was mentioning कि
Select City Walk, or in some mall, there's going to be sales promotion, there are going to be discounts. क्या behavior रहेगा customers का for December 2019? What do you think? Ma'am, in December, many of the customers won't buy the products. They'll be waiting for the sale. Exactly. Many of them will not go to the showrooms, or because they will be like मतलब वो 2020 में ही जाएंगे जनवरी में कि हम सेल्स में खरीदें. Ma'am, customers will refrain themselves from buying before the sale. Yes, they'll refrain themselves. They'll wait for the promotion. तो क्या होता है when you give promotion, okay, Jan की sales तुम्हारी एकदम sales increment दिखेगा, पर आपको ना December का sales में एक dip लगेगा, एक dip दिखेगा. And when you are checking the impact of promotion, तो आपको ये negative जो sales numbers हैं ये भी factor in करने पड़ेंगे, ये positive है ये भी. February 20 में आए. What about February 20? Sale January 20 में हुई. Something regarding stockpiling. Do you understand what is the stockpiling? Yes, ma'am. No, ma'am. Please explain. अच्छा, January जैसे January 2020 का तुमने बोला. Ma'am, there will be a decrease in stock or maybe no stock in February month. Sorry. Ma'am, it will be increase in stock. हम अगर जान में सब ले लेंगे तो स्टॉक तो बन जाएगा. Yes, ma'am, because there is sale now in January, so there may be हो जाएगा, ma'am. Exactly, वो एक्सेस में खरीदेंगे. तो दिसंबर में उन्होंने वेट किया, इसलिए मेरे सेल्स के नंबर कम थे. जनवरी में उन्होंने पूरी शॉपिंग करी बिकॉज सेल्स प्रमोशन चल रहा था, और फरवरी में फिर से डिप हो गया क्योंकि उन्होंने जन में इतना सब स्टॉक पाइलिंग कर ली थी बिकॉज दे बॉट इन बल्क. सो I think all this is clear now. Okay. So let's come to this case study. This case study is on one oats brand, kind of ready to eat, breakfast oats. And this oats brand makes 2.2 margin per 18 ounce of package. जो package का weight है, package का weight. Ma'am, there's a doubt. हाँ. Yeah, in the previous case study, ma'am, when you mentioned that there was a sale in Jan, so ma'am, company का फायदा क्या हुआ? उनका दिसंबर में भी पूरा सेल रुका रहा, and उसके बाद फेब में भी पाइल अप हो गया, और जनवरी में जो उन्होंने करा वो भी उन्होंने प्रमोशन के बेसिस पे करा है, तो इनका फायदा क्या है? इनका तो फिर लॉस ही है ना. वही देखना है कि कितना नेगेटिव यहाँ पे हुआ और यहाँ पे कितना नेगेटिव हुआ और यहाँ पे कितना पॉजिटिव हुआ, और ये सब आपको चेक करके और देखना है कि टोटल इम्पैक्ट, नेट इम्पैक्ट प्रमोशन का क्या हुआ, whether it's positive or whether it's negative. Ma'am, please could you explain stockpiling once again? Stockpiling is like जनवरी में मैं दिसंबर में हूँ, okay? Consider it's December 2019. मुझे पता चलता है कि जनवरी में सेल हो रही है. मेरी एक फ्रेंड मुझे कॉल करती है कि मनीषा लेट्स गो फॉर शॉपिंग. आई थिंक फॉर अ मिनट एंड आई से नहीं, जनवरी में सेल होगी तो अभी नहीं सेल, मतलब अभी शॉपिंग नहीं करेंगे. देन आई एम वेटिंग फॉर प्रमोशन. मैं जनवरी में जब प्रमोशन होता है, जब डिस्काउंट मिल रहा होता है, तब मैं बहुत सारा मतलब क्वांटिटी में वट एवर आई वॉन्ट टू बाय, आई विल बाय इट इन लार्ज क्वांटिटी. अब मैंने जनवरी में बिकॉज वो लार्ज क्वांटिटी में ले ली, तो अब मैं फरवरी में तो एकदम खरीदूंगी नहीं. तो क्या होता है, मैं स्टॉक कर लेती हूँ क्योंकि जनवरी में मैंने क्वांटिटी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लिया. तो इससे क्या हुआ, अब अगर कंपनीज देखेंगी फरवरी में उनकी सेल्स के नंबर्स कम हो जाते हैं. दिस इज व्हाट स्टॉक पाइलिंग इज. ओके मैम, थैंक यू. जैसे जनवरी में सबने स्टॉक कर ली, लेकिन कंपनी के पास तो कैश आ गए ना उस टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए. हाँ, और कस्टमर के कैश चले गए. एग्जैक्टली. पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हम वैसे ही देखेंगे. यहाँ पर सेल्स हमारी डिप हो रही है, वेटिंग फॉर प्रमोशन, तब भी सेल्स हमारी डिप हो रही है. पर जब प्रमोशन एग्जैक्टली होता है उस मंथ में हमारी सेल्स इंक्रीमेंट दिखेगी. तो हमें वही चेक करना है कि यस मैम, बट आई थिंक कि दिसंबर का जो भी डेटा होगा सेल्स वो ज्यादा डिप करेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फरवरी. maybe depends on customer to customer. If it is like something which is of very necessary thing, they can't live without. They have like this mood, or they have this thing कि अभी खरीदना है.
it's of like dire need. They will buy it in December. They will not buy it, wait for the promotion. If it is like so much of necessity kind of thing. And even in February, although there was this promotion, they were like not able to, go for that sale or whatever. They feel that they need to buy this. They can do shopping in February also. So you can't say कि dip ज़्यादा कब होगा, एक महीने पहले या एक महीने बाद. मैम बट उनका रेशियो तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो सेम ही होगा ना. लाइक दिसंबर में सेल्स नहीं हुई पर जनवरी में हो गई, तो उसका इम्पैक्ट रेशियो तो सेम ही होगा अगर कंपेयर किया जाए तो. हाँ, वही देखना है हमें कि कितना क्या इम्पैक्ट हो रहा है. तो व्हाट इज द इम्पैक्ट और वो हमारा ROI पे क्या फर्क पड़ रहा है. यू हैव टू चेक दिस. यहाँ पर जब चेक करोगे ना, यहाँ पर देखना कि हमारा इसमें 2-3 चीजें तुम्हें चेक करनी होंगी. ट्रेंड क्या है. 2015 से 2016 यहाँ पर कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ. ठीक है, ये चेक करना. यहाँ पर कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ. तो बेसिकली ये जो इंक्रीमेंट है, व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रेंड. दिस इज ट्रेंड. अब यहाँ पे प्रमोशन होता है. प्रमोशन होने से पहले अभी रुक जाओ. प्रमोशन अभी पार्क कर देते हैं. अगर प्रमोशन नहीं होता तो क्या नंबर्स होते सेल्स के, कैसे निकालोगे? मैम 10% इंक्रीमेंट दिखा रहा है लुकिंग एट द हिस्टोरिक डेटा. एग्जैक्टली. मैम एवरेज निकाल सकते हैं. नहीं, एवरेज का क्यों, एवरेज करके क्यों नलिफाई करना चाहते हो? क्वार्टर वाइज आपको पता है कि क्वार्टर वाइज सेल्स भी इंक्रीज होती है. व्हाई नॉट टू टेक क्वार्टर वाइज क्वार्टर 2015 और 2016 का. तो इसको तो एवरेज से निकाल सकते हैं. हाँ, एवरेज से नहीं, एवरेज नहीं. डोंट एवरेज इट. एवरेज से तुम तो क्या एवरेज रेशियो से यू कैन जस्ट टेक द इंक्रीमेंटल ग्रोथ. क्या इंक्रीमेंट हो रहा है? 100 to 110 दिस इज 10%. 10% ही तुम इस पे लगा दो. 10% इस पे, 10% इस पे, 10% इस पे, तो तुम्हारा एक बेसलाइन नंबर आ जाएगा. Isn't it? ये बेसलाइन नंबर आ जाएगा. हम इससे ही सॉल्व करवा लोगे. ओके, ये बेसलाइन नंबर आ गया एंड देन यू चेक द डिफरेंस बिटवीन दिस बेसलाइन एंड जब हमने ये प्रमोशन किया. एंड देन चेक कि वो नंबर्स कहाँ पे डिप हो रहे हैं, कहाँ पे बढ़ रहे हैं. एंड इज इट बिकॉज कब हमने सेल्स प्रमोशन किया, कब हमने अनाउंस किया. एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट कि ये डिप क्यों हुआ होगा, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ स्टॉक पाइलिंग और वेदर ऑफ सीजनैलिटी, ऑल दीज थिंग्स. ओके, so this is something that you have to do and you have to find answers to it. Coming to this case study for oats brand. इसमें हम regression run करेंगे, but I have done a little bit of analysis, just plotting it on Excel, some of the charts. So there is this ready to eat breakfast oats. उनका margin, this is the margin. $2.2 is the margin per packet. Okay, एक packet. For this calculation, one packet is like 18 ounce. That is the weight. और हर एक पैकेट में they are earning this much. $2.2 is the margin. Okay. Now you will get this monthly data. 4 साल का उनका monthly data तुम्हारे पास होगा और कितना sales volume है. ये वो spend कितना कर रहे हैं consumer promotions पे, वो spend कितना कर रहे हैं trade promotion पे. And then you have to assess the impact of promotion on sales volume. So the data set is something like this. 14, 15, 16, 17, 4 साल का month wise month आपका ये data है. These are sales in thousands. Okay. These are like consumer promotion. Consumer promotion में वो company January में कितना उसने spend किया. And this is like in $1,000. Okay. Basically 3,60,000 $1 कूपन रिडीम किए लोगों ने. And this is the trade promotion. इतना उन्होंने 686. This is also in thousands. This is the amount they are spending on trade promotion. Multiple regression लगेगा ना? Sorry? Multiple regression के basis पे होगा. या मल्टीपल रिग्रेशन लगेगा, बट रिग्रेशन से पहले 2 चीजें देखनी होंगी हमें. मैंने ये प्लॉट किया सेल्स वॉल्यूम ओवर टाइम. ठीक है, व्हाट इज द सेल्स वॉल्यूम ओवर टाइम. कुछ चीजें हैं इसमें लाइक सीजनैलिटी.
this trend, seasonality, waiting for promotion, stockpiling. You have to prepare this data so that you can capture all these things. कि ट्रेंड के कारण क्या रीजन है, सीजनैलिटी के कारण क्या है, वेटिंग फॉर प्रमोशन के कारण कितना पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है. सो बेसिकली सो दैट यू कैन अराइव इट कि नेट इम्पैक्ट प्रमोशन का क्या होगा. ओके, सो यू हैव टू डू दिस इन दिस केस स्टडी. So sales volume over time, let's see, let's go one by one. Okay, I'll tell you some of the things that how you have to prepare the data and you know how do you have to run regression. Okay, so let's see sales over time, month, and these are my sales number. Just 1 second. These are sales number. तो सेल्स मंथ ऑन मंथ क्या सेल्स रही, मैंने उसका एक प्लॉट ले लिया. एंड व्हाट कैन यू सी इन दिस. ये स्पाइक्स को छोड़ देते हैं अभी, बट यू नो चेक दिस लाइन, ये काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन. व्हाट इज इट टेलिंग यू? That it's increasing. Sales are increasing. And With yes, the low rate, it is increasing, but yeah, this is just a mild trend. Average So, rate. yeah, मतलब month on month sales increment तो है, there is growth in sales. But there is a decreasing rate. No. Increasing in the decreasing rate. Ma'am, it is increasing, but not at a larger extent. increasing rate how? So check mild trend है. This is the ये check this line. बेसिकली आप लाइन ये कैसे ड्रॉ करते हो कि ऊपर और नीचे वाली जो फ्लक्चुएशंस हैं वो इक्वली आ जाए, एंड देन यू पुट अ ट्रेंड लाइन ऑन दिस. और ये ट्रेंड लाइन इंक्रीज हो रही है ना, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज नॉट फ्लैट, दिस इज इंक्रीजिंग. Yes. That means this there is mild trend, there is mild year on year or you say month on month increment in sales. And what do you mean by trend? Trend क्या होता है? Which remain for a long run. The behavior. For a long run, and maybe, and it could be, the reason could be because of population, because the population is increasing, and that's why the demand is increasing. So there's this mild trend, you know, mild growth you will see. Okay. Next thing is ये spikes. Check these spikes. कुछ ऐसी seasonality दिख रही है इसमें? Can you spot any seasonality? कि कुछ Yes, month ma'am. में ज़्यादा है, कुछ में कम. January 15, January 16, January यहाँ Yes, पर, ma'am. and September 17. Ma'am, because people take a resolution of getting fit during their new year. That's why there's a spike during January. Yeah. The same is with the gym membership. September 16 and September 17. September, there's September में November, September, November, there's this dip. So this is During the festive season, there's a low sales of oats. Okay, is that so? Yes, ma'am. November, December is the Christmas time and the winter break time, I guess. Okay, okay. So yeah, so there is like there is this seasonality that you can see in the data कि ये जो spikes है ये year on year repeat होता है कि हर साल 14 January 2014 में देख लो, 2015, 2017, basically in January month there will be you know increase in sales numbers, whereas in some months there will be this decrease. So this is called seasonality. So we have seen there is trend in this data, there is seasonality in this data. Okay. So what else? We have seen the seasonality. We have seen the trend. Next thing that you have to do is you have to plot sales volume over time and consumer promotion over time. जैसे ये plot किया है. So one on sales volume over time. This is already, I have already plotted sales volume over time. And on same slide, just put one graph of sales volume over time. और एक ग्राफ रखना कंज्यूमर प्रमोशन ओवर टाइम.
ये दोनों डेटा पॉइंट में है ना हमारे, सेल्स एंड कंज्यूमर, एक ग्राफ बनाना और फिर सेल्स एंड consumer promotion and the time, that is your year. This is going to be your one graph and this going to be your second graph. Okay, वो plot करके देखना and check whether there is like something which is related, like जब sales volume increase हो रहा है तभी consumer promotion है, is there anything like that? Check that. Also check by correlation also, and explain the dip and rise. Do you see there is any dip and rise because of this sales promotion and this consumer promotion, all these things, sales volume and consumer promotions, it's doable, isn't it? दो ग्राफ बनाने हैं और बस चेक करना है कि what is the dip and where is the rise. Ma'am, what is this carryover effect? Ma'am, can you repeat once again because my network was not strong that time. Okay, so basically जैसे मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया एक्सेल में, हाँ, जैसे ये ग्राफ प्लॉट किया ऐसे ही दो ग्राफ प्लॉट करने हैं. एक प्लॉट करना है मंथ और सेल्स वॉल्यूम का, और एक प्लॉट करना है मंथ और कंज्यूमर प्रमोशंस, और फिर चेक करना उन दोनों ग्राफ्स को प्लॉट करके क्या कोई कोरिलेशन तुम्हें दिख रहा है कि जब कंज्यूमर प्रमोशन बढ़ रहा है तभी सेल्स वॉल्यूम बढ़ रही है. आर यू एबल टू सी एनी कोरिलेशन बाय प्लॉटिंग दिस? Okay, ma'am. Yes. Okay, so this is the thing. Ma'am, please explain carryover effect. वो carryover effect I'll explain here. So ma'am, we have to test the correlation, like the कौन से मैम जो पीछे 4 फैक्टर्स आपने बताए थे उससे हम लोग को चेक करना है कि जो सेल्स है और जो थर्ड वाला वेरिएबल है जो आपने कहा था जिससे हम लोग को सेकंड ग्राफ प्लॉट करना है. या एक तो आप सिर्फ एक्सेल में ही दो ग्राफ रन करके चेक कर सकते हो, विजुअली सिर्फ एक्सेल में ही चेक कर सकते हो. यस मैम. सेकंड थिंग इज यू कैन रन कोरिलेशन आल्सो. ओके मैम. Okay, that's your choice. That is your choice. Okay ma'am. Okay, so that is second thing that you have to do, because first thing is your clothing brand wala jo assignment tha. Now you have to like prepare the data. हमने trend और seasonality का तो कर लिया. Okay, and the next thing is you have to prepare the data. What is this carry over effect? जो मैंने बोला कि अगर हमारा जैन में प्रमोशन है तो एक महीने पहले हमारा सेल्स का डिप हो जाएगा, या अगर और या फिर फरवरी में जो है अगर जैन में प्रमोशन हुआ है तो फरवरी में डिप हो जाएगा. So we have to control that carry over effect also. How can we do that in regression? So I'll quickly explain कि डेटा में तुम्हें क्या क्या चेंजेस करने हैं. सबसे पहले एक ट्रेंड वेरिएबल क्रिएट करना. Okay, trend variable is basically to counter the trend. इसमें ही इस डेटा सेट में एक वेरिएबल क्रिएट करना ट्रेंड. ट्रेंड इज नथिंग बस गिविंग numbers to your month. January 14 is 1, February 14 is 2, 3, 4, ऐसे काउंट ऐसे अराउंड 47 48 तक आ जाएगा ये. ठीक है, ये एक कॉलम ऐड करना. ठीक है, Are you able to understand this? Trend समझ में आया? Yes ma'am. सिर्फ 1 2 3 तुम्हें ये वेरिएबल ऐड करना है, that is trend. Next is seasonality. Seasonality हम कैसे करेंगे? हम डमी वेरिएबल्स यूज करेंगे. डमी वेरिएबल्स याद है? फॉर एग्जांपल जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके कैटेगरी को कोई न्यूमेरिक को असाइन कर देते हैं. यस, कैटेगरी को आप न्यूमेरिक कर दोगे और डमी वेरिएबल 1 लेस होता है. तो अगर जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कौन सा वेरिएबल नहीं लेंगे? दिसंबर नहीं लेंगे, सिर्फ नवंबर तक करेंगे. तो दिस इज इन जनवरी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे. यहाँ पर फरवरी है तो ये सब 0 हो जाएंगे एंड सो ऑन. ठीक है, ये कोडिंग हो जाएगी. तो एक ट्रेंड वाला हो गया, एक आपका ये मैम ये वाला ये लास्ट वाला क्यों हटाते हैं? ओके,
So ये dummy variable, like I explained, it's like in 0 1 and system already knows कि अगर आपका ये एक हमेशा less होता है. I'll share one article on this. I'm running short of time, but मैम पिछली बार आपने बताया था कि we can code that male female into 0 and 1, वैसे ही करना है. Exactly, we can code it into 0 and 1. We have to code it in 0 and 1. So January 2014 की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, तो यहाँ पे 1. Okay, and हम ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे. हाँ, और जब हम रिग्रेशन में चेक करते हैं तो याद होगा कि जब जिसको भी हम दिसंबर को हम बेसलाइन मान लेते हैं, जिसको भी हम एक कम वेरिएबल को जिसको भी हम कोड करते हैं, हम जब रिग्रेशन आउटपुट एक्सप्लेन करते हैं तो हम वो दिसंबर या जो भी वेरिएबल लेते हैं उससे एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने बताया था कि प्राइस सबसे लोवेस्ट था, we took that as our baseline, तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसे एक्सप्लेन किया था. ओके, सो क्विकली ये तुम्हारा ट्रेंड वेरिएबल हो गया, तुम्हारा ये सीजनैलिटी वाला हो गया, जनवरी टू नवंबर. दिसंबर वी आर टेकिंग एज बेसलाइन. सो अगर जनवरी टू नवंबर सब अगर 0 है तो बेसिकली ऑटोमेटिकली इट्स दिसंबर. ओके, I'll give you original data. I'm not going to share this changed वाला data. You have to make all the changes. एक वेरिएबल ट्रेंड का डाला, एक सीजनैलिटी का डाला, जनवरी टू नवंबर. फिर देन देयर इज दिस इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशन एंड कैरी ओवर इफेक्ट. क्या करना है फॉर इम्पैक्ट ऑफ प्रमोशंस? बेसिकली कंज्यूमर लैग करके एक वेरिएबल क्रिएट करना, और कंज्यूमर लैग में क्या करना है, ये सारे सिर्फ एक रो स्लिप कर देना. बेसिकली जनवरी 14 आपका ब्लैंक हो जाएगा और 360 वाला फरवरी 14 में चला जाएगा. ये एक और नीचे आ जाएगा. ठीक है, ऐसे एक नीचे स्लिप कर देना. हम एक बार फिर से बता दीजिए. बेसिकली एक और वेरिएबल कंज्यूमर लैग मींस अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं जनवरी में, ये $360 whatever we are spending on coupons in January 14 is going to hurt us in next month. January 14 में हमने जो प्रमोशन किया वो हमें हर्ट करेगा February 14 में. And so what we do is we create this consumer lag variable 360 73. बेसिकली ये यहाँ पर ये यहाँ पर एक एक ड्रॉप कर देना, एक नीचे नीचे कर देना. ठीक है, ओके ओके. जनवरी 14 में कुछ नहीं आएगा मैम. हाँ, जनवरी 14 में फिर तुम्हारा ये खाली हो जाएगा कंज्यूमर लैग. ऐसे ही तुम ट्रेड वाला भी करोगे. मैम नीचे मैम दिसंबर 17 में जो लास्ट वाला है उसमें क्या होगा मैम? दिसंबर 17 में ये वाला आ जाएगा, नवंबर 17 वाला. हाँ, ऊपर वाला आ जाएगा. तो मैम उसके बाद जो दिसंबर 17 की जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी? उसका दिसंबर 17 नहीं, जनवरी 18 बोलो. जनवरी 18. यस मैम, जनवरी 18 वाली. जनवरी 18 वाला वैल्यू जनवरी 18 में जाएगी. हाँ, बट हम जनवरी 18 भी रिमूव कर देंगे बिकॉज वी डोंट हैव सेल्स नंबर्स फॉर जनवरी 18. और हमारे पास क्योंकि दिसंबर 13 की भी वैल्यूज नहीं है, तो हम ये जनवरी 14 वाला, जब हम जनवरी 14 की जो ये वैल्यू है कंज्यूमर लैग वाली, जब फरवरी में काउंट कर रहे हैं, तो ये वाला कॉलम भी रिमूव कर देना. समझ में आया? मैम लास्ट वाला ट्रेड, ये जो 686 वाला कॉलम आपने बताया वो नहीं समझ में आया. जैसे कंज्यूमर में, जैसे कंज्यूमर लैग तुमने एक ड्रॉप करके कर दिया तुमने कंज्यूमर लैग. यस मैम. बेसिकली जो जनवरी का है वो फरवरी. वैसे ही ट्रेड वाला करना है, 686 वाला यहाँ पर, 383 वाला यहाँ पर. ठीक है, और फिर यहाँ पर मैम ये तो समझ में आ गया, बट ये 18 वाला ईयर का मतलब हम लोगों को पूरा हटा देना है, जनवरी फरवरी एंड मार्च एवरीथिंग. नहीं, 18 का तो है ही नहीं तुम्हारे पास डेटा ना, तुम्हारे पास दिसंबर 17 तक है बेसिकली. हाँ, 17 तक ही मैम हम लोगों को करना है ना. एग्जैक्टली 17 तक ही करना है. और क्योंकि जनवरी 14 का हमारे पास लैग वाला प्रीवियस मंथ से नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास दिसंबर 13 का भी डेटा नहीं है, तो वी विल रिमूव दिस. ठीक है. एंड मैम जिसमें भी जैसे 0 होगा कस्टमर पे, जैसे कंज्यूमर पे लिखा हुआ है अक्टूबर 14 पे 0 है, एंड उसके बाद भी 0 है, तो मैम उस केस में ऊपर वाला जो अमाउंट है वही कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे लैग. एग्जैक्टली. हाँ हाँ, तो सेम ही रहेगा ना, लैग 45 पे ही रहेगा. हाँ, मतलब बस सारा वो तुम एक स्लिप कर दोगे.
ये वाला जीरो मतलब जो 3 जीरो हैं ये वाला कंज्यूमर जीरो की यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ये वाला अच्छा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। So these things you have to do, and this is how you take care of promotion effect, missing data के लिए जैसे मैंने ये करा, and then you will get this kind of regression output, and you have to interpret this output after that. Okay. So that was all on promotion, and you have to submit it by tomorrow. Tomorrow EOD. Okay. मैम थोड़ा टाइम ज्यादा तो हम लोग को और भी असाइनमेंट करना Yes, ma'am. Please नहीं हो allow पाएगा us मैम। more time. बहुत सारे मैम असाइनमेंट फ्राइडे मैम सबकी मैम सैटरडे एंड संडे वी हैव एक्स्ट्रा क्लास difficulty हो रहा है मैम। On this week, ma'am. okay, Friday on this commitment कि logistic regression की वीडियो जो मैं दूंगी, you have to go through that video and Okay, ma'am, answer the questions. Okay. Sure, All sure. right. So that was all. Can you even post this recording on LMS? Yes ma'am, please. Oh, I'll Ma'am, yes, ma'am. I'll share Ma'am, the because PPT. I'll share the PPT, huh? no, ma'am, not PPT. Ma'am, recording should recording. come. Recording, ma'am. Ma'am, ये Because- assignment बिना क्या recording करना के तो exactly बिल्कुल that नहीं will होगा। be able to बिल्कुल do. Yes, नहीं हो ma'am, पाता because the end was a bit confusing. Okay. And ma'am, we also need to go once again. All right. I'll do that. Okay. Okay. Thank you. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.